Chaitanya Prabhu and Jyoti. Let's go like that. Hare Krishna. Hare Bol. Yes. But yes, well, yes. Thank you, Baladev. Thank you. I'm okay either way. Whichever I think more people will understand English. You think? This is ICC. So I mean. Hindi is okay with me, but whatever you feel. Yeah. Because I was thinking about the audience. So the audience will move. Hindi will good. Pardon? Yeah. So they can understand Hindi? Yeah. Okay. Right, so can do it in Hindi. Maybe at some other time I can do it in English. Sorry? Carry on. What were you saying? Yes. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. That's fine. I was just saying that maybe at some other time we can do it in English also. This time we'll do it in Hindi. Is that all right? Okay. Yeah. Namo Namaha. लाइन ब्रेक हो रहा है मालूम नहीं हमारे प्रोब ठीक breaking. What is the problem?
Krishna. Yeah. Please, thank you. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Actually, Prabhupada ji ने कहा कि book distribution is the heart of ISKCON, यानी कि ISKCON का हृदय है book distribution। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि book distribution मेरा भी हृदय है, यानी कि प्रभुपाद जी का हृदय है। और किसी भी देश में, किसी भी शरीर में जो हार्ट, हृदय होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हार्ट के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। सो लाइक दैट Prabhupada had lot of interest in book distribution, and there are some wonderful anecdotes regarding book distribution, the importance of book distribution, which I would like to share if I can start now. The first anecdote I would like to share is that Prabhupada ji ने actually एक बार एक most relishable statement by Srila Prabhupada. It's a statement which I find very important. Nectarian statement. Of course, every statement, जो भी statement प्रभुपाद जी के मुखाबिन से निकली है, वो बहुत ही अमृतवाणी है, उनकी important है, महत्वपूर्ण है हमारे। लेकिन मेरे को एक statement प्रभुपाद जी की वाक्य जो है प्रभुपाद जी का, वो सबसे important और अमृतवाणी लगी है मेरे लिए। वो संजीवनी है वो statement। वो statement इस context में है कि एक रिपोर्टर अमेरिका में प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपका आंदोलन अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब व्हाट विल हैपन व्हेन यू डाई, जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये मेरे लिए और मुझे लगता है सब ISKCON के डिवोटीज के लिए संजीवनी है। प्रभुपाद जी ने कहा, आई विल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज लिव थ्रू माई बुक्स। He is always present in his books. So Prabhupada ji बहुत importance दिया कर रहे थे। It is the heart of ISKCON, or book distribution is very important. But side by side, studying the books is also very important. Prabhupada ji बहुत emphasize करते थे। दिन रात उन्होंने translate किया। Most of the day he was preaching. At night he would take just a little rest और फिर ट्रांसलेट करने लग जाते। मैं एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूँ। मुंबई में ये भगवत दास मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने बताया कि वो प्रभुपाद जी के साथ एक बार रूम में थे। प्रभुपाद जी कुछ लाइफ मेंबर्स को प्रीच कर रहे थे, और जब ये वो लाइफ मेंबर्स चले गए तो प्रभुपाद जी ने भगवत दास से पूछा कि आपको क्या समझ आई कि मैं श्लोक और ये जो पढ़ रहे थे, मैं समझा रहा था उनको। तो भागवत ने कहा, सॉरी प्रभुपाद, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो प्रभुपाद ने कहा, भागवत लिख, आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर डूइंग मैनेजमेंट, यू आर कलेक्टिंग फंड्स, सो मेनी अदर एक्टिविटीज यू आर डूइंग, बट reading the books is equally important. I'm writing these books for you. You should study these books. And then Prabhupada was silent for a little while, and then he said, I study my books daily. मैं अपनी पुस्तकें हर रोज स्वयं ही पढ़ता हूँ, और जब भी मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। और फिर प्रभुपाद जी ने सबसे रहस्यमय बात का पोल खोला कि जब भी मैं उस बुक्स लिखता हूँ, every morning Krishna comes
वही डिक्टेट करते हैं, मैंने खाली लिखित रूप दिया है इन पुस्तकों को। सो वी कैन अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बुक स्टडी करना। और एक मैंने रिलायबल सोर्स से यह भी सुना कि ये प्रभुपाद जी की गोलोक में लीला श्री कृष्ण जी के साथ, सो श्री कृष्ण जी प्रभुपाद जी को उनकी इच्छा थी कि यहाँ हमारा सब संसार का डिलीवर करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा हेजिटेट चौंक रहे थे कि ये तो बहुत dirty, filthy place, a बहुत difficult place. I'm not anxious to go there. So उसमें भगवान श्री कृष्ण ने assurance दिया, don't worry, I will take care of everything. You don't need to worry about anything. Still, Prabhupada was a little bit hesitant. Of course, he will never deny Krishna's instruction, but still he was a little bit hesitant. So then Krishna assured him, when you go to the material world, your books will be the law books for 10,000 years. So that really inspired Srila Prabhupada, and one of the reasons that Prabhupada came to us deliberately. And here we see also that he paid so much attention to BBT. He was so meticulous that all the books were very high quality, physically also, quality also, the content also. उन्होंने सब पूर्व के आचार्यों से कमेंट्रीज को रिफ़र किया। ये एक सीरीज ऑफ बुक्स हैं जिसमें आप सबको एक ही वन प्लेस, एक स्थान में कमेंट्रीज बाय द वेरियस आचार्यस, beginning from Sridhar Swami, then in the line many Vidaragar Swami, then the Sadhu Swamis, then Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, all the acharyas' commentaries in one place. And we have an obligation to Srila Prabhupada. Actually, जो Srila Prabhupada जी ने हमारे को दिया है, उसका हम कभी भी ऋण चुका नहीं सकेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का कहना है कि आप प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, that will please me. So कम से कम we'll follow his advice, and then Chaitanya Mahaprabhu will be very pleased. This yesterday I was reading one nice anecdote. Chaitanya Mahaprabhu ji himself, उन्होंने temples नहीं बनाए, लेकिन संकीर्तन पर ध्यान दिया। और प्रभुपाद जी ने कहा कि if you keep on distributing these books, my books, then Chaitanya Mahaprabhu, he will come personally at the time of death and take you back to Godhead. So it is very important we take these instructions very seriously. This is the life and soul of ISKCON, an activity which is very pleasing to Srila Prabhupada. It helps us, the devotees, and it helps the general public also. And yeah, please if you some questions, I will have some more things to say. Would you have any questions at this point? ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे, और I will start with the incident in which I was at the receiving end. मतलब कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर मेरे को क्या असर हुआ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, कोई और बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, और जिसके कारण आज मैं ISKCON में हूँ। तो ये था, एक्चुअली मैं लंदन यूनिवर्सिटी में था, और
वहाँ में मैं प्रोफेसर्स को हमारे पूछता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ आई हैड दिस क्वेश्चंस but they were not interested to answer. At one time I even joined the Communist Society of England. I thought that maybe some social work would be helpful. I did many types of social but nothing satisfying. So one day I was walking in Oxford Street. Oxford Street में मैं जा रहा था, माया की kingdom है Oxford Street. Somehow I had some work there. And I saw all of a sudden devotees chanting, all foreign body devotees, all Western devotees, Matajis in saris and devotees in Sikha and orange clothes. So I was very surprised to see them. And one of them, they gave me this book, Easy Journey to Other Planets. I think ये पहली बुक थी जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी और भागवतम का सेट भी था पर जो सिंगल बुक तो थी Easy Journey to Other Planets. तो मैंने वो बुक्स ली और मैंने रास्ते में पढ़ी और प्रभुपाद जी ने वो ही भगवद गीता बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेजेंट की है. भगवद गीता एंटी मैटर, एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, एंटी मटेरियल वर्ल्ड. तो ये सब दिस वाज कैप्टिवेटिंग. और उसी समय में मून की जर्नी हो रही थी. अमेरिकन्स वर इंटरेस्टेड इन द और सो कॉल्ड मून but it's true, it's debatable or not, but they were claiming they are going to the moon. So ये थोड़ा सा इंटरेस्ट है. What is this easy journey to other planets? This inspired me. और जैसे मैंने वो बुक पढ़ी, it seemed to be, what is this to do with God consciousness or yoga? So I went a little deeply into it, and I found that actually it was very relevant to my questions. And there was the address of the book of the temple. मैं टेम्पल में पहुंचा और सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद जी उसी मंदिर में थे. 7 बड़ी प्लेस लंदन में. और जो फर्स्ट वाक्य प्रभुपाद जी के मुखाबिन से जो फर्स्ट वाक्य था उसी से मेरे को कन्विक्शन हुई. प्रभुपाद जी ने कहा ये डार्विन की जो फिलोसफी है उसको हमारे जो कृष्णा कॉन्सेप्ट फिलोसफी सिद्धांत है विल स्मैश, खंडन कर देगी इसका. क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भौतिकवादी भी था उसमें. और फिर प्रभुपाद जी ने डीटीज पर इशारा किया और वो कहने लगे भगवान कृष्ण यही हैं, ठाकुर जी ये डीटीज में हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये पत्थर हैं तो ये पत्थर ही रहेंगे. तो उसके बाद क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा पहले ही इस वाक्य में कि डार्विन्स थ्योरी, क्योंकि मैं थोड़ा भौतिकवादी था, उसका खंडन कर देगी कृष्णा कॉन्सेप्ट. मैं ऊपर गया, उनके कक्ष में कई और डिवोटीज भी थे, सब प्रणाम कर रहे थे प्रभुपाद जी को. मुझे कुछ नहीं मालूम था क्या करना, लेकिन मैंने उनको भी फॉलो किया. आई ऑल्सो और फिर सौभाग्य से प्रभुपाद जी ने मेरे से हाथ रखा और एक शब्द बोला जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जय. वो शब्द था जय. ऐसी अनुभूति हुई, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि साक्षात भगवान श्री राधा जी कृष्ण जी वहीं उनके साथ, और यही सब जिन्होंने भी प्रभुपाद जी का संग क्षण के लिए भी लिया हो सब कैसे हो. और उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है और मैं अपना जीवन समर्पित करूँगा. तो ये एक जो मैंने कैसे कहा, ये संजीवनी प्रभुपाद जी का दर्शन, प्रभु जी का दर्शन, प्रभुपाद जी का एसोसिएशन वापू और वाणी के माध्यम से होता है. पर्सनल कॉन्टैक्ट में होते वाणी उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो. और रही बात, आपने भी इसको टच किया था कि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई. मैं इंडिया में 1977 में आया था फर्स्ट टाइम, और उस समय एक्चुअली इंडिया में हम वी वर नॉट रिसीव्ड वेरी वेल और बहुत फॉल्स चार्जेस. जैसे देवानंद ने एक फिल्म बनाई थी, फेमस पर्सन, कि हरे कृष्णास दे आर CIA एजेंट्स, ऐसे डिपिक्ट किया दम और बहुत बदनाम किया था हरे कृष्णा मूवमेंट को CIA एजेंट्स कहकर. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था. मैं BBT लाइब्रेरी पार्टी में था, भागवतम सेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता था. वहाँ में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शंस मिले. कई तो एक्सट्रीम में पीपल वर रिजेक्टिंग अस
almost to the point of violence. We had to practically run for our life. And other times they were very receptive. Also, कई जगह में बहुत अच्छा हमारे को response भी. So we are very fortunate now, actually, by the continuous process of book distribution, it's a काफी improvement, and now people are receiving these books, and they are actually very receptive. Yeah, thank you. प्री ऑर्डर्ड ही होता है भगवान की. कृष्णा इज द बेस्ट प्लेयर. अगर मैं उस दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में नहीं गया होता और वो डिवोटी मुझे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स नहीं देता, और मैंने वो पढ़ी क्योंकि मेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड थी, सो आई कुड इजीली रिलेट. बट आई वांटेड टू नो व्हाट इज दिस एंटी मैटर, एंटी प्रोटॉन्स, एंटी एटॉम्स टू डू विद गॉड कॉन्शियसनेस. फिर आई स्टडीड मोर and I went to the temple, they gave the answers, and Prabhupada, hearing from him directly that our philosophy will smash Darwin's philosophy, because I was somewhat a Darwinist, you can just imagine. So, and relating to me, how book distribution benefited me, and I have also some other anecdotes to share कि book distribution का क्या दूसरों पर लाभ हुआ. ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन इटसेल्फ की भी बहुत एक रोचक कहानी है, कैसे ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन स्टार्ट हुई. क्योंकि प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार सब डिवोटीज बहुत प्रेरणा के साथ, बहुत उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. तो एक बार ऐसा हुआ, अमेरिका में कुछ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और उसी में उनको एक पेट्रोल स्टेशन में जाना पड़ा पेट्रोल भराने के लिए. तो पेट्रोल तो भरा लिया, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया एक्चुअली हमारे पास राशि नहीं है इनको पे करने की. तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें. तो उन्होंने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम ये मालिक, पेट्रोल स्टेशन के मालिक को ये कृष्णा बुक दें. इतनी अट्रैक्टिव बुक है, प्रभुपाद जी ने इतनी अट्रैक्टिव बुक्स दी और फिलॉसफी सिद्धांत, प्रभुपाद ने नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. तो इतनी अट्रैक्टिव बुक थी, उन्होंने मालिक को प्रेजेंट किया. सॉरी, वी डोंट हैव एनी मनी, प्लीज टेक दिस बुक. और रिस्पॉन्स, ही वॉज वेरी हैप्पी. ही टुक कृष्णा बुक. तो उधर से उनको ये आइडिया, इंस्पिरेशन मिलने लगी. तो एक्चुअली पीपल आर हंग्री फॉर दिस बुक्स, दे वांट दिस बुक्स. तो फिर उन्होंने क्रिसमस के टाइम में, उन्होंने रियलाइज्ड क्रिसमस के टाइम में, around this season, people are spending lots of money, wasting money on useless things, wasting. So why not take these books? So they got up this idea and they started distributing books and books, more and books, and Prabhupada also encouraged them. So it's lifelong, the month-long book distribution program. And also one other anecdote I want to share, that actually कभी कभी हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हम इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लेकिन डिवोटीज नहीं आ रहे. पर एक्चुअली सम वे और द अदर, सम टाइम और द अदर, बिकॉज कृष्णा इज द बेस्ट प्लानर एंड द बेस्ट टाइमर. उनका प्लान है, वी मे नॉट नो इट, बट ही हैज अ प्लान. जस्ट यू टच दिस बुक्स, रीड वन वर्ड फ्रॉम दिस बुक, योर लाइफ विल बी चेंज. तो ये एनेक्डोट ऐसा एक रशियन डिवोटी इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन ने रिलेट किया था कि एक्चुअली बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ही वाज एक्चुअली प्रोफेशनल थीफ. सो डेली ही वुड गो, और एवरी नाइट ही वुड गो फॉर स्टीलिंग. वन डे कमरे में घुस तो गया किसी के घर में, और ही वाज लुकिंग फॉर समथिंग, क्या चोरी करूं. उतने में वो जो घर का मालिक था उसको भनक लग गई
कि कोई चोर घुसा है, तो वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तो जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, इसको भी मालूम पड़ता है अभी कोई आएगा मैं पकड़ा जाऊँगा, तो अभी तो मुझे भागना पड़ेगा। आदत होती है, हैबिट इज सेकंड नेचर। जो हैबिट है उसको हम जल्दी छोड़ नहीं सकते, कुछ तो चोरी करना। तो then he saw that Gita was lying on the table, so he grabbed the Gita and ran to his house. और घर जाकर थोड़ा पढ़ा, उसने देखा something new, he was very inspired. बुक में एड्रेस लिखा हुआ था रशिया के एक मंदिर का, तो वहाँ मैं पहुँच गया और डिवोटीज received him, gave him prasad, preached to him and told him about book distribution. And now he's one of the most important, one of the greatest book distributors in the former Soviet Union. Like that, कहीं ना कहीं this will take effect. Book distribution is so important. And also I want to share one other thing that now that there is multi social media and also all the books are available in digital form, which is very good. So sometimes we may feel that in this age the books may not be so relevant. Actually, that's not true. Books are as relevant as ever. मैं तो समझता हूँ अभी और भी अधिक relevant है. As the schools are, as we see the schools, books have been distributed in lakhs and lakhs. Actually, books, they are like deities. There are no difference between the deities and the books. Because Krishna, ये भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि वो आर्ट फॉर्म्स में इनकारनेट करते हैं. deities like मेटल में हो या काष्ठ में लकड़ी में हो, फिर सैंड में धरती में, फिर ज्यूल्स में, मन में भी deities आती हैं. Yes, these are all different forms. And then he also says, Shastra, you need the word. Shastra is also an incarnation of Krishna. इंक और पेपर जो है, और आजकल के एज में ये जो डिजिटल जो है, this is also an incarnation of Krishna, forms of Krishna. So they are as worshipable, the books are as worshipable as deities. और मुझे तो लगता है this digital age is not going to reduce our book distribution. Although there are conveniences with the digital, we do realize that कि space safe हो जाती है और दूसरा reference वगैरह easily मिल जाते हैं in the digital technology. But I do not think that this digital technology will ever replace book distribution, especially spiritual books and of a great master like Srila Prabhupada. Yes. Deity, yes, it's a deity. They are as worshipable, and we can get any benediction from these books. Just like if you were praying to the deities for some benediction, you can even pray to the Bhagavatam and get benedictions from the Bhagavatam. They are conscious, not different from Krishna, Avatar of Krishna. Please.
distribution कहीं भी हो उसके लिए one of the most important principles is that हमारी साधना बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं भी हो, अगर आपकी साधना अच्छी होगी तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे to take these books. And nowadays we are also stressing the congregation or involving the congregation. This is very important. At one time there were more brahmacharis in the temple and less congregation, but now the congregation is expanding. So book distribution अगर हमको increase करनी है तो बहुत methodically, बहुत systematically हमको congregation को inspire करना पड़ेगा। और as far as my zones are concerned, luckily I have many good leading book distributors. I always invite them, and also while I'm at this point, I also want to thank ICC कि ने जो इनिशिएटिव्स लिया है उससे बहुत ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव हुआ है, particularly with Chaitanya Prabhuji, Baladev Prabhuji, Sahadev Prabhuji, Praneshwar Prabhuji, and many other devotees. They have done wonderful. Since the ICC committee book distribution committee was formed, they have taken so many initiatives, distributed so many sets of Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita, never in the history before. So at this point I thank them also. Or as far as my zones is concerned, I also have regular seminars, and I invite leader good book distributors who come accomplished book distributors to inspire the junior devotees like that. And always the devotees should have a stock, big stock of books. They should never run out of books. Yeah. The book distribution में many other people are involved. Those who are cooking, those who are engaged in other services also, so that the book distribution can go out. Everything is, it is like an army. Your book distribution, the Krishna consciousness is like an army. So जब भी प्रभुपाद जी लेटर लिखते थे, कोई भी लेटर, उसमें टाइटल लिखते थे कैंप दिल्ली, कैंप न्यूयॉर्क, कैंप लॉस एंजलिस, whatever it is, like that. It's like this Krishna consciousness movement is like an army with Prabhupada as our head, as the general, and we are the soldiers of Srila Prabhupada. So in that context, somehow I was a little disturbed. Sorry, some interruption was there. I wanted to make one more point. These books, Bhakti Siddhanta Thakur ji, is pranachaya se karibe prachar. Anybody that has life will preach. And conversely, having life is a sign of preaching. Both things are true. And Prabhupada, although he had wonderful achievements all around in making so many temples, so many devotees, thousands of devotees, Rath Yatras, Gurukuls, farms, etc. But his most important was books, distribution,
printing of books, because this was the direct order by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. In Radhakund, Bhakti Siddhanta Thakurji instructed Srila Prabhupada, if you ever get money, print books, because Bhakti Siddhanta Thakurji was rather a little bit concerned with the goings on in the Gaudiya Math. He was even saying, sell the marble in the Bhag Palace, temple, and print books. He was to that extent, because Prabhupada was a visionary. One sociologist, he has said that if you are just planning for some short duration to grow something for it, then you plant rice. Rice takes 6 months to grow. After 6 months, over. If you want, vision is a little longer, 20 years, 25 years, then you plant trees, because trees will live for 25 years minimum, maybe more, 50, sometimes more. But if you want to something that will live forever, then plant men. In other words, make the character of men. If you make the character of men, it will go on eternally. This was also Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurji saying that the temples, they will open, but they will also, when the deities are taking rest, the temples will close, or when the prasad offerings are good. But I'm disconnected. Don't go away like this. I'm disconnected. Okay. Okay. All right. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur narrated that story. Now I'm coming to Prabhupada's. This one sociologist said that if you want something that will live for a long, long time, then you plant men. And Bhakti Siddhanta Thakurji, in that same vein, had earlier said that regarding this printing of the books, Pranachi, he already touched on that. Someone was a little disturbed, I lost the track of my thought. Okay. Okay, very good. Thank you. Thank you. उन्होंने कहा कि राइस का थोड़े देर लगेगा 6 महीने, और अगर ज़्यादा 20 चाहिए तो भी trees 20 साल तक 20 trees, or if you want something which lasts for a long time, then you plant men, develop the character. That's what Prabhupada did. These books are meant to develop our character. So this movement will go on, and they will be the law books for the next 10,000 years. And Bhakti Siddhanta Thakurji also said that again I forgot. Okay, some important point. When I come to it, I'll say that again. The 24/7. Bhakti Siddhanta Thakur said that the temple sometimes closes. We cannot have darshan when the offering is going on or when the deities are resting. But Bhakti Siddhanta Thakurji is saying, more important is to have the temple of the heart and the temple of books, because they will remain open always 24/7. Thank you very much. Yes. D. Right. Yes, that's what was it. And going in that same vein, I think many of our leaders have also contracted the same disease. They cannot think small.
Gopal Krishna Maharaj, Rannath Maharaj, so many leaders, Lokanath Swami, so many leaders, they're doing such wonderful Mohan Rupa. They're doing so wonderful service. I hope that one day I will also catch that disease. It's a wonderful disease to think always big. And I hope all the book distributors also get inspiration. And this is a wonderful disease to think big. That's a wonderful disease. Hare Krishna. Thank you. सभी participants का बहुत बहुत धन्यवाद और बलदेव प्रभु जी for the questions and Vedanta Chaitanya Pranishya Prabhu, Sadev Prabhu, thank you very much for this committee. Excellent work you're doing. Thank you. Yeah, thank you. Hare Krishna. See, when I'm speaking, Yeah. stop because Yeah. of distraction. Next time I Next close it, lock it because it's a distraction. Where they come and all. Yeah. Sorry. Next time I But then I forget what I'm saying. Yeah. My Start distraction. to